art, mime, then the business of acting, then what is the industry all about, how do you go about approaching people, and we luckily have a tie-up with all the casting directors. In fact, Mukesh Chabra is after a month doing a full-fledged workshop on how he and his team tackle auditions and handle auditions. S. Joseph is doing something for us again in December on how it is casting for what is the international producers and directors and employers looking at the Indian performer. We've done I think about 100 workshops on stress management, anxiety, prevention of suicide, because this was a big problem that happened during COVID because we were all alone. And that's something that we constantly keep on doing. Our old office space we are now converting into an absolute rehearsal space where our members can use that at subsidized rates, rehearse and prepare a performance. We've divided Mumbai into 10 zones. We have about 10,000 members. Each zone has got about 1,000. We're having an interzonal theatre competition where the final 3 performances will be in our auditorium. Our auditorium is now state of the art in tandem with Veda Factory. It's a 230-seater auditorium. And people like Anand Mahadevan and Lilith Dubey and Rajit Kapoor and Nila Arun and Om Katare, Danish Hussain, they came and they were floored. It's got a balcony, 230. We use it for screenings also, state of the art JBL system. So it's primarily, and for our members, of course, there's a discount. And so that's what we're doing. We have a welfare center there. We started doing a lot of workshops on AI because that's a big disruptor. In fact, Cinta was the pioneer in taking the Me Too movement worldwide. So Me Too in India was actually propagated and we fought for it. We expelled some members whose names I don't want to take for indulging in such activities. And we're also now starting a casting division where we're creating a database, sharing it to the casting directors. And we to Delhi we're not a very cash rich. We are approaching corporates for CSR. We're approaching the government. We are also approaching the CM for low-cost housing near Naigaon, Virar area, because most of our shoots have moved that side. And our past president, the late Vikram Gokhale, he's donated 1 acre of land on the outskirts of Pune to us and to the Mumbai Marathi Chitrapat Mahamandal. These are adjoining plots where again the government is helping us. We are making an old age home and also a Guru Kutir wherein a lot of our actors, this is an idea that came from Mr. Al-Ghazi because he after every performance he used to take us to his Guru Kutir in Sona, and he had made a place where students could come work on a play or a performance, and वहीं उन्हीं के farm house से सब्जियां आ जाती थी. This is also something that we want to create. So Mumbai Marathi Chitrapat Mahamandal, with whom we have a great equation. So both our properties will be close by. So architecturally it will not look weird. And we're speaking to 2-3 people to offer us extremely subsidized catering facilities. Simple but hygienic, that is in the pipeline. And of course we are fighting a lot for intellectual property rights for the artist performer, which is worldwide. In India you've got to relegate it. We are fighting, most of the multinationals in India are working like the East India Company. कि अपने मुल्क में रूल्स अलग हैं, यहाँ पर अलग हैं. और मैं बहुत बुरा मानता हूँ क्योंकि मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये बोलता हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे काम भी नहीं देते इसके लिए. But it's okay. And we are also doing a lot for health, safety, sanitation, fire hazards, and luckily the state government and the central government are really helping us out. And our industry status is something that we're really fighting because we don't know which industry we belong to. Like for example, Arfi is a producer and an actor. Okay, Surupa is an actor. Rakesh is an actor. Do I come under the purview of the cultural ministry, the information and broadcasting ministry, the skill ministry, the labor ministry, or the cultural ministry? मुझे almost 30 साल हो गए, मुझे ये मेरा माई बाप नहीं मिला. तो जिस दिन उसके लिए जब दूसरे लड़ाई. So this answers
most of your questions. Thank you so much. Thank you. Do we have more questions? I've loaded them with so much information. I'm wondering क्या सवाल पूछे. I think you provided everything which was needed to be said. So, कोई question का आपने scope ही नहीं छोड़ा. सर वो सवाल इसीलिए पूछा था कि ताकि हम सब up कर सकें और बच्चों को भी पता चले कि Intnat is what actually they are doing. Initiatives क्या है. Yeah, I mean, I'm very proud. I mean, I've been a Sinta member since '96, but I've been an office bearer since 2015, and I'm very proud to say that our committee has really worked hard. When Om Puri ji was our president, after that Vikram Gokhale ji, we managed to make a lot of inroads. The governments recognize us. Not only me. I mean, I'm just the face of the organization. All our committee, and we work honorably. Every office bearer of Sinta doesn't get a single penny from the organization. The only thing we get, chai, coffee, biscuit, हम petrol पे अपना खर्चा करते हैं. But yes, 10 years down the line, when you look at, I'm a chartered accountant, I'm an engineer, I'm a doctor, I'm an IT professional, I'm a lawyer. No, I'm an actor, I'm a writer, I'm a director, I'm a music director. I create content. And at the same respectable level, which is the fact, which is what is happening in America. Sir, I have one question for you. Sir, जैसे कि आपने बोला कि हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को और ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है. So this year 2023 was a very fabulous year for Indian films. So do you think कि अभी हमारा future अभी ऊपर जा रहा है? See, creativity and creating content is you don't know what. Like, Please, can we have no disturbances from the people in the back? Either you can settle down or just lower your voice. Thank you so much. see, what happens is that when somebody makes a piece of celluloid or a painting or poetry, you do not know कि वो end में will the audience buy it, or will I have a niche audience for it? Or sometimes some piece that you create, you're not happy with it, but the audience loves it. Okay. What I'm happy is that the new wave of filmmakers, the new wave of writers, and they're not afraid to take risks. Okay, they are really not afraid to take risks. There is no fixed formula. जिस दिन इंडियन सिनेमा और इंडियन टेलीविजन और इंडियन एसपीओडी स्पेस फॉर्मूला से हटेगा, है ना. सी फॉर एग्जांपल, एक तरफ हम बॉश देखते हैं, एक तरफ मार्वलस मिसेस मेजल देखते हैं, फिर हम बम्बई मेरी जान देखते हैं, है ना. नेटफ्लिक्स पे आप काला भी देखते हो, नेटफ्लिक्स पे आप नार्कोस भी देखते हो, है ना. और फिर उसके बाद आप कालकोट भी देखते हो. आपको कहानियां सुनानी है, कहानियों को अच्छी तरह से राइटर्स रूम को उसको लॉक कर रहा है, और हम जैसे प्यालों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर एब्सोल्युटली we are pawns in the hands of the writer and the director. And the other teams, I mean, we've got our people who are working backstage and people who are technical people are collaborating with the best in the world. I mean, somebody like Rasool Pukati or Rahman Saab, I mean, they are going places. I mean, Rasool he just directed his own Malayalam film, and after having won an Oscar for sound design for Slumdog Millionaire. So people are, what I like is his multifaceted personality. विशाल भारद्वाज म्यूजिक डायरेक्टर भी है, विशाल भारद्वाज लिखते भी हैं, विशाल भारद्वाज फिल्म भी बनाते हैं. Okay, so these kind of people are the disruptors. People like us, we are acting or producing, and so it's. I just hope that this boom doesn't burst like a bubble. We get stable, just stable. Keep on making good stuff. Don't ape anybody. Make the stuff the way you want to make the stuff, and remember that Indian content has been there since time immemorial, before BC, no? So we still survive. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yeah. So I think it was wonderful having you. आपने जिस तरीके से इतनी information प्यारी तरीके से सबको बताई. It was very informative, very especially for the BMM students. हमें काफी इस idea और scope मिला.
Now I would like to call Ma'am Charu and Ma'am Mamta on the stage to felicitate. Fundamentally, literature and cinema became a great confluence, and people like Yathakatha and Siddiqui and Uzarsa, they couple these very well, and I think it's a confluence of literature and cinema should always be there. You should have more festivals. About the most important part of languages, which is a form of communication, and Hindi being the most at the moment overseas and in India being focused on Hindi. What do you think this is going to be a turning point for Hindi to gain, or will it be only English? And what is your take on other little languages as well? Both of you. तो वैसे तो हम पंजाबी हैं, मैं मेरे फादर्स पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से आए थे, लेकिन मेरी मम्मी हिंदी की अध्यापक थी। 45 साल उन्होंने एम ए के स्टूडेंट्स को भी सिखाया। भारतीय विद्या भवन में हिंदी पढ़ाती अध्यक्ष थी। मैं मुंबई का हूँ, मैं मराठी फ्लुएंटली बोलता हूँ, गुजराती फ्लुएंटली बोलता हूँ, अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, इंग्लिश बोलता हूँ। बट मुझे लगता है कि नेशनल लैंग्वेजेस को भारत देश के बहुत सारे देशों का एक समागम है। जैसे अगर हम इंग्लैंड की बात करें, हम यूएस की बात करें, तो वो अंग्रेजी यूज करते हैं, अलग अलग एक्सेंट। हमारे यहाँ हिंदी जब है तो हर 100 मीटर मतलब 100 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे भाषा का एक्सेंट बदलता है। लेकिन हिंदी भाषा को एक राष्ट्रभाषा बनाना और हिंदी की समझ, जो आज के लोग, जब हम बात कर रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मीडिया एंटरटेनमेंट, तो वो हिंदी इंडस्ट्री, और हमारे ही भाषा में काम करने वाले लोग अपनी भाषा की समझ नहीं जाते, और हम कई बार अपनी भाषा का मजाक भी उड़ाते हैं दूसरे एक्सेंट यूज कर। किंतु भाषा को इज्जत देना तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम जनगण मन के लिए जब खड़े हो जाते हैं तो हिंदी भाषा को भी समझना, हाँ आप जिस प्रांत के उस प्रांत की भाषा को समझना तो आप अति आवश्यक है। मैं अपने आप को महाराष्ट्र में कहता हूँ क्योंकि मैं बड़ा लेकिन चूँकि मैं मेरी रोजी रोटी मुझे हिंदी सिनेमा, हिंदी थिएटर, हिंदी फिल्म से आती है, तो इसलिए इस भाषा की पकड़, इस भाषा की जानकारी, इसके साहित्य की जानकारी, इसके इतिहास की जानकारी मेरे लिए ज़रूरी है। बहुत सही बात है अभी आपने कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, हमारे लिए एक पहचान का भी हिस्सा है, बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट जिसको कहते हैं। ऑफकोर्स मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कारण इसका महत्व हम सबको पता है, लेकिन उसके अलावा भी एक जो आप स्किल सारी ज़िंदगी साथ लेके चलते हैं वो है कम्युनिकेशन और भाषा की पकड़। तो अगर आप अपनी उस पहचान को खोते जाएंगे तो भीड़ में अकेले कैसे खड़े रहेंगे? हाउ डू यू मैनेज योर ओन आइडेंटिटी? बाहर रहते हुए ये मैंने सोचा और देखा कि हम भारतीय जितने बाकी भाषा के लोग, बाकी देशों के लोग अपनी भाषा के साथ व्यवहार करते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी में ज़्यादा हम बात करते हैं। उस चीज़ से रियलाइज हुआ कि हमें बदलाव लाना पड़ेगा कि भाषा जो है वो हमारी पहचान है, और हिंदी देश की सबसे ज़्यादा विदेशों में और हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो एक बाइंडिंग लैंग्वेज की तरह उसको हम लोग यूज़ करने को किसी भी प्रांत में कोई भी कार्य अपना कर सकते हैं। और वहीं ग्लोबली भी अगर आप देखें तो हिंदी 3rd लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, जो हम भारतीय भी नहीं मानते और ना जानते हैं, उसको प्रमोट नहीं करते हैं उस तरह से। और लगता है कि स्पेनिश और चाइनीज़ सीख लेंगे तो शायद हमारे को बेहतर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट और काम के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्रोइंग, और इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ हम लोगों का काम करने की जो क्षमता है वो भारत में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको एक स्किल की तरह ट्रीट करें और आगे भी बढ़ें हिंदी को लेके, तो आप लोग सच में तरक्की कर पाएंगे। और सच में हम लोग बहुत ही कहते हैं ना सम्मानपूर्वक अपनी भारतीय भाषाओं को लेके चलेंगे। और सभी मातृभाषाएं, हिंदी एक स्किल है मगर बाकी भाषाएं भी हमारी पहचान है, तो उसको हमें ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए और समझना चाहिए।
और अपनी भाषा दृष्टि नई सृष्टि की तरफ नए अप्रोच के साथ आप बढ़िया आगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Rolling. Yes, roll. Would you like to rolling next event? हाँ रोल रोल नया पिक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है लिटरेचर और फिल्म्स को जोड़ने का एक अच्छा एक मतलब एक इसको समारोह कहते हैं या कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो भी एक कॉलेज में हो रहा है। और आज की पीढ़ी को लिटरेचर और सिनेमा तो सबको पता ही है, लेकिन लिटरेचर और सिनेमा का जोड़ कैसे होता है, मतलब एक साथ कॉम्बिनेशन जो होता है, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बस इसी तरीके से फेस्टिवल अगर होते रहे, मतलब कॉम्पिटिशन को शादू मैम स्टाफ टू अनुषा स्टीम टू बॉन भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं, तो ऑब्वियसली और हम जैसे लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं और थोड़ा बहुत सिनेमा की समझ रखते हैं, हम लोग को डेफिनेटली जिस तरह से इनकरेज कर सकते हैं।